बैक टू अनदर वीडियो। आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी रिक्वेस्ट हमसे की है शुभांकर ने, जो हमेशा हमें बुलाते हैं दीदी और दादा। यस, और मुझे पता है कि ये मराठी का वर्ड है, दीदी एंड दादा। दादा मीन्स ब्रदर और दीदी मीन्स तो पता ही है मुझे क्या होता है, दीदी बहन। एनीवे, अभी हम जो काफी दिनों से हम लोगों को एक वीडियो की रिक्वेस्ट हमें कर रहे थे और वीडियो का टाइटल है 25 अमेजिंग साइंटिफिक रीजंस बिहाइंड इंडियन ट्रेडिशंस एंड कल्चर। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम जानना चाहेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का, इस चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। 25 amazing scientific reason behind Hindu traditions. ओके, नमस्ते। नमस्ते। थोड़ा सा इसमें आइडिया है। Great. ग्रीट। Namaste, the traditional Indian greeting, a gesture which marks respect, reverence and love for the person we greet. So why do we greet people in this way? In yoga, this gesture is called the Anjali Mudra. It is a well-known fact that the tips of the fingers are major energy points. When we bring together the palms of our fingers, linking the tips of our fingers, then the nerve circuits of the brain are linked to those of the upper body. A feeling of calmness and well-being immediately descends. Also, in yoga, each finger is representative of a certain energy. The little finger represents tamas or dullness. The ring finger represents rajas or activity. The middle finger represents sattva or refinement. The index finger is the individual soul or jivatma, and the thumb is the paramatma or the ultimate soul. These are the reasons behind Namaste, the traditional Indian greeting. मुझे ये नहीं पता था, मैं खुद बहुत डीपली बताया। Okay, why do temples have bells? Okay, interesting, honestly. Agamartantu devanam, gamanartantu rakshasam, kurve gantarvam tatra, devadahvana lakshanam. I start my worship ringing the bell, praying that the divine may enter me and all demonic forces within and without depart. Traditional Indian worship always started with the ringing of the bell. The temple bell was a beautifully crafted object made of an amalgam of several metals including zinc, copper, bronze, cadmium and many other alloys. The quantity of each metal was based on very accurate scientific calculation. When the bell was rung, there was a resonation which created an immediate harmony between the right and left lobes of the brain. The echo lasted 7 seconds, touching the 7 chakras of the body. The sound of the bell created an instant calm, increasing the powers of concentration, helping you to focus on the higher. A well-designed temple bell could also produce the sound Om. Okay. Think India, and the thought that comes to mind are pictures of the majestic temples of the land. These temples were not just immensely beautiful architectural wonders, they were also places of immense spiritual strength. Scientific analysis has today proven that these temples were built over areas of maximum positive energy. The Moolasthana or Garbhagriha was built at the spot where energy was maximum. The idol was placed and the Garbhagriha built around it. This point indicated the place of maximum positive energy. Placed below the idols were copper plates with Vedic inscriptions capable of absorbing and radiating energy. When a person visited the temple and walked around the parikrama, they came within the radius of this magnetic field, thereby imbibing a lot of positive energy. The result was that the visit to the temple rejuvenated him, body, mind and soul. Okay. Ganpati. Ancient Indian scriptures
were texts of religion and spirituality. The Upanishads were texts of immense spiritual strength based on authentic scientific facts. India had a long history of idol worship. The cognitive power of the mind comes from symbols. For example, when we hold a coin in the hand, we are aware of money power. Money power itself is intangible. Our ancestors understood that it was difficult for a simple mind to comprehend abstract truths. Idol worship was the answer. When an idol is placed before a devotee, it helps him to focus instantaneously, increasing concentration and thus enabling him to move easily to his higher selves and realms beyond. The devotee was free to choose idols according to his inclination and likes. This enabled instant concentration and easy movement to higher realms. Idol worship was then an answer to help devotees understand abstract truths easily. Preferred wilding. Okay, ये मुझे नहीं पता था कि silk. Why is it that traditionally Indians wore silk clothes while offering puja? Silk had the capacity to attract and absorb electromagnetic energy. The constant friction between the cloth and the body created an electromagnetic attraction. When the devotee did puja wearing silk clothes, there was an instant absorption of the energy created, which was then transmitted to the devotee, creating a feeling of instant calm. This silk also prevented loss of that energy, thereby leading to increased concentration. This was the reason why devotees all over India, whether the Maharashtrians for Ganesh Puja, the Bengalis for Durga Puja, or the Gujaratis for Lakshmi Puja, preferred to do worship wearing silk clothes. ये हमने कभी नोट नहीं किया ना? अभी तो मैं कह रही हूँ ये चीज़ मुझे आइडिया नहीं था. Why do married women apply Sindoor? The Sindoor was applied not just to indicate a married woman. The Sindoor was made of a mixture of lime, turmeric and mercury. Mercury helped to decrease the blood pressure and also enhance the sexual drive. Hence, widows were not allowed to use Sindoor. Mercury also helped to bring down feelings of stress and strain. For best results, Sindoor was used all the way from the forehead right down to the pituitary glands, the seat of all thoughts and emotions. Think of Indian women, and images of beautiful bangles in different hues and colors immediately flash before the mind. So why did Indian women traditionally wear bangles? It is said that the tinkle of a bangle in a house kept the negative at bay. Ancient Ayurveda stated that the bones of the women were weaker than those of men. Bangles were traditionally made of gold and silver. These metals helped to absorb energy, which was then transmitted to the body, improving physiological functioning. Also, the pulse, which was felt at the wrist area, was used to diagnose several major ailments. The constant friction between the bangles and the wrist area ensured good blood circulation. Again, the energy which was released by the skin was absorbed by the metals in the bangle and returned to the body. So, now we know that bangles were not just mere ornaments, but also served a very good scientific reason. Why do we apply henna on hand and feet? क्यों? When we talk of Indian marriages, we immediately think of the mehendi ceremony. Beautiful henna drawn on intricate patterns on the hands and feet of the bride. Why do we apply henna? Apart from the fact that it looks beautiful, there is a very scientific reason behind this. Applying henna cools the body and brings down fever and headaches. ये तो है.
Traditional Hindu marriages are long drawn out affairs. They create a lot of stress and sometimes fever. Applying henna on the hands and feet brings down fever and reduces tension, cooling the body. Henna is also an important antiviral and antifungal agent. It helps to keep rashes down and brings down fevers and other ailments. अच्छा जी, touring. अच्छा. Traditionally, Indian women wore toe-rings. Toe-rings were worn not just to indicate the marital status of the woman. There was a scientific reason behind wearing toe-rings. Toe-rings were made of silver and worn on the second toe. It is a well-known fact that there is a nerve which starts from this toe, goes to the uterus and then to the heart. By wearing toe-rings, good circulation was ensured, thereby strengthening the uterus. The menstrual cycle was also regulated, ensuring speedy conception. Also, silver is known to be a good conductor. Silver absorbs the energy from the earth and passes it on to the body, thereby rejuvenating the entire system. These are the scientific reasons behind wearing the toe ring. Bang. क्या हुआ? What is scientific behind applying kumkum on the forehead? Indian women traditionally wore kumkum. Kumkum was applied on the forehead between the eyebrows. Okay, this is called. Today, it is scientifically proven that this is a major nerve point. The rishis of ancient India understood this to be the seat of the Ajna Chakra, the center of infinite intuition. By wearing kumkum on the mid-brow area, the power of intuition was increased. The center of intuition was opened up and increased concentration. It also helped to increase blood supply to the facial muscles. By applying kumkum on the mid-brow areas, the Ajna Chakra was automatically activated. Turmeric considered holy in India, and what are its uses? Okay. Turmeric is an important part of all Indian cuisine. Turmeric is well known for its anti-inflammatory and antioxidant properties. All curry powder in India contains turmeric. It is also considered holy and is a part of all auspicious occasions, worth its weight in gold, like the color of the spice. Turmeric is an important anti-inflammatory agent. In combination with other antioxidants, it helps to contain inflammation. Turmeric has been widely used in traditional Indian medicine through the centuries. Today, turmeric finds an important place in conventional medicine and helps to cure diseases like cancer, Alzheimer's, diabetes and arthritis. ये मुझे नहीं पता था. मुझे भी नहीं. While Indian women pierce their ears, okay, ear piercing. Indian women traditionally wore earrings. Ayurveda stated that by piercing the ears and wearing earrings, several diseases like hernia could be controlled. It also helped to regulate the menstrual cycle and restrict hysteria. The electric current within the body was also regulated by wearing earrings. Indian physicians and philosophers believed that by piercing the ears and wearing earrings, the power of the intellect, the thinking faculties and the power of decision making would increase. It also helped to contain incessant chatter, a process which would drain the body of all its energy, making sure that the person was calmer and maintained a certain dignity and decorum. Problems associated with the ear channels could also be curtailed by wearing earrings. Pronunciation of Om. The chanting of Om helps the mind calm down, thoughts recede, and there is an instant feeling of peace and calm.
Om is considered the primordial sound of the universe, the first sound. This universal sound is a combination of 3 syllables, A, U and Ma. When we pronounce Om, as we say A, the lower portions of the body up to the stomach are activated. As we say U, the chest area is activated. With Ma, the face and the brain gets activated. The proper pronunciation of Om ensures good intake of oxygen required for a good body and mind. Mystics say that Om is like the clapping of one hand. Chanting Om ensures peace and quiet, which relaxes the body and the mind. Tulsi plant. In Indian culture, Tulsi is accorded the status of mother. Tulsi is also called holy or sacred basil. The spiritual and medicinal properties of Tulsi are renowned the world over. Tulsi is an important adaptogenic herb which helps to reduce stress. Tulsi is a remarkable antibiotic. Its medicinal properties are renowned. It helps to cure several ailments, including the common cold. Containing no caffeine or other stimulants, Tulsi helps to increase physical endurance. Taking a Tulsi every day helps to maintain the physiological balance in the body and increases immunity. More important, Tulsi increases your lifespan. Keeping a Tulsi plant at home keeps the insects and mosquitoes away. It is said that even snakes are kept at bay. In India, every traditional household from time immemorial to this day has the Tulsi plant for both its spiritual and medicinal significance. People. अच्छा ये मुझे नहीं पता था. तुम्हें पता था? मुझे लग रहा था ये Certain trees were venerated in India. Most important among them was the peepal tree. तुम्हें पता था? The peepal tree neither had tasty food nor strong wood. So why then was this tree considered so important? The peepal tree was capable of generating oxygen 24 hours a day. Our ancestors knew that the peepal tree generated oxygen day and night, making it vital to maintain the ecological balance. By associating this tree with the divine, our ancestors made sure that it was never cut or damaged in any way. Some trees are considered sacred in India. Certain trees were considered sacred in India. The neem, the audumber and the peepal tree are some of them. These trees are propagated by seeds dropped by birds. The audumber tree is associated with Lord Dattatreya. So what makes these trees so important? All these trees had the capacity to generate oxygen through the day. Our ancestors, understanding that these trees were important to maintain ecological balance, ensured that they were never cut or destroyed in any way by associating them with the divine. In traditional India, people ate their meals seated cross-legged on the floor. What were the benefits of eating meals seated in this posture? By sitting in Sukhasana, as this posture was called, the body relaxed, making the body ready for the digestive process. Also, the constant movement of bending forward and straightening up made sure that digestive juices were released, enhancing speedy digestion. While sitting and getting up, joints were made more flexible, removing ailments like arthritis. So, there were several benefits to eating your meals in the traditional way, seated in Sukhasana. Yoga के pose है ना? Where do we start with spice? Our ancestors stressed the fact that every meal should start with spicy foods and end with the sweets. What was the scientific rationale behind this theory? It is well known that when we take spicy foods, the body secretes digestive juices and acids which enhance the digestive process.
Sweets contain a lot of carbohydrates, which make for sluggish digestion. Also, the intake of sugar enhances the absorption of amino acid tryptophan. Tryptophan increases the levels of serotonin, a neurotransmitter associated with the feelings of well-being. That is the feeling that we experience at the end of a full meal. This was the rationale behind our ancestors stressing that every meal should start with spicy foods and end with sweets. Fast. Fasting is one of the important tenets of Ayurveda. Ayurveda is based on the premise that most ailments stem from the fact that there are toxic materials retained in the body. By fasting, we help to cleanse the system and regulate body functioning. A complete fasting is good for health with occasional sips of lime juice. The body contains 80% liquid and 20% solid, just like the earth. The gravitational force of the moon sometimes creates disturbances in the body. Fasting helps to cut down the intake of acids, thus regulating stress and hysteria. Modern research shows that fasting helps to correct several ailments including Alzheimer's, cancer and diabetes. There is a popular misconception that by fasting we become weak. On the contrary, by fasting the system is cleansed and physiological balance is maintained. A day of fasting helps the digestive system and helps the proper functioning of several organs like the liver, kidney, pancreas, etc. Okay. Choti on the head. The human body has 7 chakras, starting with the base chakra or the Mooladhara and ending with the highest chakra or the Sahasrara or Sahasradala. The Sahasradala is also defined as the 1,000-petaled lotus. The Kundalini, energy that lies coiled like a serpent at the base chakra, can be made to rise through yogic exercises right up to the Sahasradala. The enlightened master is one who through his spiritual practices raises the Kundalini from the Mooladhara to the Sahasradala past the Shikha. Shushruth, the surgeon of Ayurveda, described this spot as the Adipati Marma. In the brain, this spot coincides with the Brahmarandra, the point where the Sushumna arrives from the lower part of the body. The Shikha covers this spot, protects it and preserves the energy, also called Ojas. Where do you touch the feet of elders? In Indian culture, it is customary to bend down and touch the feet of elders as greeting. It is said that by doing this, you acquire intellect, knowledge, strength, and fame. There is a scientific reason behind this analysis. The body is a storehouse of energy, negative and positive. The left side represents negative energy, the right, the positive energy. When we bend down and touch the feet of our elders, it indicates that we are surrendering our ego at their feet. This gives rise to karuna or compassion within them. As we touch their feet, this energy is passed on to us, thus also creating an instant liking between two hearts and minds. The nerves from the brain are spread out through the body, and when we touch another person, it forms a circuit, thereby transmitting energy from one person to the other. We become the receiver and the other person is the giver of energy. Why should we not sleep with our head towards the north? If we sleep with our heads towards the north, we invite evil spirits and ghosts. A myth. But there was a scientific reason to why we should not sleep with our heads towards the north. It is well known that the earth has a magnetic field. It is also known that the body has a magnetic field of its own. When we sleep with our heads towards the south, then the unlike poles of the earth and the body attract each other. We wake up in the morning with a sense of well-being, of having slept well and rested. Similarly, when we sleep with our heads towards the east, the energy of the sun enters the body through the head and leaves through the feet, leaving you with a cool head and warm feet. When we sleep
with our heads towards the west, the reverse happens, leaving you with a warm head and cool feet, an unpleasant sensation. Also, when we sleep with our heads towards the north, the iron in our body tends to coagulate in the brain, creating disturbances, headaches, and unpleasantness. This causes a lot of disorders, including Alzheimer's, cognitive disorders, Parkinson's, and several other neurological problems. This was the reason why our forefathers insisted that we sleep with our heads towards the south or the east. A saint and his disciples were walking along the bank of the Ganges one day. They came upon two people shouting angrily at each other. The sage decided that this was as good a time as any to teach his disciples a valuable lesson for life. "Why do people shout at each other when they are angry?" asked the sage. "Because they lose their calm," said one disciple. Several explanations were offered, but none of them were satisfactory. The sage then explained, "When people are angry, their hearts grow far from each other. They have to shout to be heard. When people love each other, their hearts are close to each other. They speak softly and can be heard. They need not speak at all. Their eyes can communicate their feelings." "When you are angry," said the sage, "don't let your hearts grow too far apart, or it may not be possible to come back." ये भी मेरे लिए नया। पुराने वक्त में सुना था लोग फेंकते हैं। Throwing coins into the well brought good luck. मूवी में What देखा was था the मैंने। scientific reason behind this custom? Tanks, ponds, rivers were the ancient water bodies. Also, coins in traditional India were made of copper, unlike the steel ones that we use today. One of the properties of copper was that when it was thrown into the water, it helped the dust particles to settle to the bottom, thereby making the drinking water available on top. Copper was also an important element needed for the body. By bringing in this custom, our ancestors assured that there was a daily intake of copper. What is the scientific reason behind one of the most common punishment methods? Remember the traditional punishment where you crossed your hands across your chest, held alternate earlobes, and sat down and got up as many times as the master demanded? This was a punishment that was in vogue from the days of the Gurukulam. But there was also a scientific rationale behind this punishment. As you sat down and got up several times, blood circulation was improved, stimulating better concentration and memory power. By crossing the hands across your chest and holding alternate lobes, there was fine coordination between the right and left sides of the brain. By pressurizing the points on the earlobes, brain cells were stimulated, thus decreasing learning disabilities in weak students. बात करूं अगर मैं आज की इस वीडियो की, तो बहुत सारे उन्होंने जो फैक्ट्स बताए हैं वो काफी ज्यादा अमेजिंग और हैरान कुन है। बिल्कुल, और मैं ये बोलूंगी कि हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं हमेशा इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को देखकर कि क्या मतलब इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है और ये चीजें हैं, कलरफुल चीजें हैं, लेकिन हर चीज के पीछे एक लॉजिक है जो हमें इस वीडियो में समझ में आई। और ओवरऑल जो मुझे समझ में आया वो ये कि हर चीज के पीछे एक पॉजिटिव एनर्जी एक छुपी हुई है, एक इनर पीस आपका, और आपकी जो बॉडी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए हर एक चीज को बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हमने जितनी भी चीजें देखी हैं, बेशक वो पीपल का पेड़ हो, बेशक वो तिलक हो, बेशक वो तुलसी हो, जितनी भी हमने चीजें देखी हैं वो सब जो है हमारे जो अंदर की जो चीजें हैं, जो हमें डिप्रेशन होता है, हमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, उन सबको कहीं ना कहीं हैंडल करने के लिए ही जो
हमारे पूर्वज हैं उन्होंने वो काम किए हैं। बिल्कुल। एक चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंगली मुझे लगा था कि मुझे नमस्ते का मतलब पता है कि क्यों नमस्ते किया जाता है ग्रीट करने के लिए, लेकिन इसके पीछे जो उन्होंने लॉजिक बताई कि हर फिंगर के पीछे जो भी एक रीजन है, मतलब वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट वाले पर आए जो बेल्स वाला था, वो भी बहुत ज्यादा, और फिर उसमें जैसे बताया कि उसमें एक एक्यूरेट मात्रा से सारी जितनी भी जो मेटल हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है बेल बनाने में, बेल बनाया जाता है। मेरे लिए ये चीजें वाकई में बहुत हैरानकुन और नई इसलिए क्योंकि मैंने कभी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा। बिल्कुल। और यहाँ पे उससे नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, जो टेंपल विजिट करने की और जो उन्हें बनाने की जो चीजें हैं कि वो वहाँ पे बनाई गई हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है आपको पॉजिटिव वाइब्स फीलिंग्स आती हैं। हाँ जी। तो अगर हम वीडियोस भी देखें ना, तो जितने भी लोग हैं जो टेंपल विजिट्स करते हैं या वहां पर जाते हैं, जैसे हमने केदारनाथ की वीडियो देखी थी, तो वो भी कहते हैं कि इस जगह पर आके ना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हमें फीलिंग्स आती हैं। बिल्कुल। और फिर उसके बाद अच्छा ये मुझे आइडिया था कि आइडल्स क्यों बनाए जाते हैं या उनके सामने वर्शिप क्यों की जाती है, क्योंकि आपका जो फोकस है वो जिनसा है वो आपको बनाना होता है कि हम किसी के सामने बैठकर मतलब अपने दिल की बात या हम वर्शिप कर रहे हैं जो भी उस तरीके से। तो अभी इसमें डेफिनेटली मुझे इतना ज्यादा एलैबोरेट नहीं करना आ रहा इस पॉइंट को, बट ये कि थोड़ा बहुत मुझे इसके बारे में आइडिया था आइडल्स के बारे में कि वो क्यों बनाकर आप उनके सामने वर्शिप करते हैं। और अगर नेक्स्ट हम बात करें हिना की बात करें, मेहंदी की बात करें, तो मेहंदी जो है वो वैसे भी लोग, ये तो अब हमें पता चला ना यहाँ पे ठंडा करने के लिए जिस्म को, और ठंडे वाला कॉन्सेप्ट पता था कि जैसे मौजूद ने बताया था। हाँ। एकदम मेरे ज़हन में आ गया था पैरों पर यहाँ पर भी लोग लगाते हैं जो बहुत गर्मी होती है तो पैरों पे भी लगाते हैं, सर पे भी अक्सर लोग लगाते हैं। में ज्यादा अभी तो अब तो बहुत केमिकल वाली आ गई। हाँ कि मोस्टली लोग ऐसे थे जो बालों पे पूरा दिन लगा के उन्होंने पेशाब पर चढ़ा लेने करने, फिर बाद में तौर पर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। वो तो अब आके करते हैं ना ज्यादा। नहीं, उस टाइम पर जब कलर नहीं हुआ करते थे, हेयर कलर नहीं होता था, तो लोग हेयर डाई करने के लिए मेहंदी इस्तेमाल करते थे। और फिर इसके अलावा लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज मौसम बताने वाला वो आप बोलो। नहीं अब आप बता दे, आप पूरी कह रही है ना बात, नहीं आप करें। नहीं मेरे लिए ये हैरानकुन थी कि लाइक ये बुखार के लिए और फ्लू के लिए भी आई थिंक है ना, फीवर बुखार ये चीजें उसके लिए भी जो है ये काम करती है। और तुलसी की अगर बात करें, वैसे तो हम अगर हर ड्रामे की या मूवी की बात करें तो इंडियन जो घरों में जो आंगन होते हैं वहां पे तुलसी का जो है पौधा लगा होता है। वो याद है इतना बड़ा पिलर खड़ा करके उसके अंदर जो है मिट्टी भर के लगाते हैं। तो तुलसी की भी अगर वैसे बात करें, तुलसी जो है वो भी काफी ज्यादा बीमारियों को जो है खत्म करती है। और तुलसी से मुझे याद आ गया, तुलसी वाला जो ड्रामा था उसमें भी वो तुलसी को पानी देते थे। और फिर इसके अलावा जो जैसे पूजा के दौरान आप सिल्क के कपड़े पहनते हो, ये मेरे लिए एक नया मतलब कॉन्सेप्ट था, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। फिर बैंगल्स वाला मेरे लिए नया था। फिर उसके अलावा मुझे अच्छा ये नहीं पता था कि कुमकुम में और जो सिंदूर है इसमें डिफरेंस है, मतलब मुझे नहीं पता था। आई थॉट कुमकुम मतलब सिंदूर। नहीं वैसे मुझे भी ये चीज यही लगती थी कि सेम चीज है। मैं दोनों को डिफरेंट नहीं था समझता। कुमकुम की बात में तो कुमकुम ड्रामा एक लगता था, तो वो जब उन्होंने कुमकुम कहा ना तो मुंह पे स्माइल आ गई थी उस टाइम। और उसके अलावा जो है हल्दी की बात करें तो हल्दी जो है वो यहाँ पे भी जो है काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है हर किस्म की डिश में। और हल्दी जो है वो भी काफी ज्यादा जो है बीमारियां हैं उन्हें उन पे लड़ने के लिए काम आती है। लेकिन होली इसको समझा जाता है टर्मरिक को, ये मुझे नहीं पता। हाँ ये तो मुझे भी पता था। और फिर ये इसके अलावा काफी सारी मेडिसिन में भी यूज होती है, इसका भी मुझे आइडिया नहीं था। इसका मुझे आइडिया मतलब आयुर्वेदिक में पहले तो डेफिनेटली चीजें यूज होती है, लेकिन आज के टाइम में नहीं, लेकिन जो पहले वाली आयुर्वेदिक या जिन्हें हम कहते हैं देसी दवाइयाँ, उनमें जो है इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे बात करेंगे पीपल के दरख्त की, तो पीपल के दरख्त पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा हैं और यहाँ पे भी लोग जो हैं नहीं काटते। मोस्टली शहरों में तो अब काफी ज्यादा कम है, लेकिन अगर शहरों से बाहर निकल जाएं तो लोग नहीं काटते। और पीपल के दरख्त की छांव की बात करें ना, वो बहुत सुकून दे होती है। मुझे वो गाना याद आ गया, पिपला दी छावे कदी बह जावे। मतलब इट मींस कि पीपल का दरख्त जो है वो कितना ज्यादा छांव देता है। अच्छा ये चीज वैसे मौसम हमें भी नहीं पता, 24 आवर्स वो ऑक्सीजन। ये नहीं थी वाकई मालूम। इसलिए तो क्या नाम लेते हैं, मेरा ख्याल है कि लोग नहीं काटते। और पुराने लोग जो हैं वो जो है इसके साये
में भी बैठना पसंद करते थे, और मोस्टली लोग जो है वो सो भी जाते हैं। एग्जैक्टली लेकिन मैं अगर भी कभी मेरा गांव का चक्कर लगा और वहां पर पीपल का दरख्त मुझे नजर आया, तो मैं किसी बड़े बूढ़े से पूछूंगी, आई एम श्योर उनको नहीं पता होगा ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। और फिर उसके अलावा ओम वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, उसके बारे में मुझे थोड़ा आइडिया था कि ओम वर्ड जो सा है उसमें आई थिंक उसको ये भी बोला जाता है कि जो पूरे यूनिवर्स का साउंड है ना वो भी उसमें आता है एक वर्ड में। और इसके अलावा एक और जो चीज थी, जो ब्राह्मण लोग जो हैं जो रखते हैं बाल यहाँ पे चोटी रखते हैं, उसका भी जो है इतना हमें नहीं था मालूम। हमने वैसे मूवीज में देखा था और ड्रामों में देखा था कि इस तरह ब्राह्मण जो है वो रखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो हमें नहीं था मालूम। इसलिए बोलूं चोटी वाला कॉन्सेप्ट मुझे अभी भी इतना ज्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि काफी वो थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि उसपे एक पूरी जो है वो डिटेल चाहिए। तो जो वर्ड्स वो यूज कर रही थी वो मुझे नहीं समझ में आ रहे थे, तो मतलब ये मुझे पता चल गया था कि डेफिनेटली वो ब्रेन का कुछ ऐसा पार्ट होता होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट होता होगा जो कि आपकी बॉडी को, आपके नर्व्स को ठीक रखता होगा। बट अगर मैं बोलूंगी मुझे एक्यूरेटली समझ में आया तो आई एम सॉरी, वो मुझे नहीं समझ में आया। फिर उसके अलावा जो आप लेग्स क्रॉस करके खाना खाते हो जमीन पर बैठकर, ये चीज मैं मानती हूँ, मैं अक्सर मौजूद ही बोलती हूँ, पहले मेरी ये आदत नहीं होती थी बट अभी मेरी आदत जमीन पे बैठ के खाना खाने का, जमीन पर बैठकर खाना खाना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं मौजूद को ये हमेशा कहती हूँ कि ऊपर बैठकर खाना खाने में इतना मजा नहीं आता जितना आप जमीन पर बैठ के। बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा अगर फास्टिंग की बात करें तो फास्टिंग के सबको मालूम है बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, और नो डाउट मोस्टली ये चीज कही जाती है कि रोजा रखने से कमजोर हो गया, लेकिन कमजोर नहीं होता, हमारे अंदर से जो गंद होता है ना वो बाहर निकल रहा होता है, क्योंकि हम खा कर अपने अंदर की मशीनरी को बिल्कुल भी वो एक रेस्ट तो देते नहीं है। तो एटलीस्ट जब हम फास्ट करते हैं तो उस टाइम पर हमारी बॉडी की जो मशीनरी है वो थोड़ा रिलैक्स हो रही होती है, उसको थोड़ा टाइम मिलता है, और उसकी वजह से काफी सारी बीमारियां जो हैं वो खत्म होती है। फिर उसके अलावा मुझे जैसे कि फीट टच करना, मुझे वो पता चला कि आप पॉजिटिव एनर्जी जो है वो रिसीव करते हो और आपको एक अगला बंदा पॉजिटिव एनर्जी देता है। हालांकि मुझे ये होता था कि इट मींस कि जस्ट ब्लेसिंग्स। और मुझे वैसे लगता है कि हमने ऑलमोस्ट जो है सब पॉइंट्स जो है डिस्कस कर लिए हैं, और सब जो है वो क्योंकि साइंटिफिक प्रूफ है ये चीजें जो आपके माइंड को, आपकी बॉडी को रिलैक्स करती हैं। मुझे लगता है कि ऐसी वीडियो सीरियसली बहुत अच्छी है और बननी चाहिए, क्योंकि ये आपकी बहुत सारी गलतफहमियों को दूर करती है, और आप अगर किसी से बात करते हो तो आपके पास लॉजिकल आंसर है किसी को बताने के लिए। ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, बहुत ही अच्छा लगा और काफी इंफॉर्मेटिव थी। और अच्छी चीज ये लगी कि मतलब आपकी बैंगल्स, इयर रिंग्स और फिर टो की जो रिंग्स थी उनसे, और टो रिंग्स से ऑनेस्टली मैं बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर भी हमारे टो रिंग्स पहनती हैं। हाँ, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि रूट सेम है, कल्चर सेम है, लोग एक तरह के हैं, डेवलपमेंट में नो डाउट थोड़े कम है, इधर थोड़े नहीं काफी कम है और उधर काफी ज्यादा है, बट ये है कि लोग एक जैसे हैं, क्योंकि वही चीजें मैं काफी ज्यादा हैरान हो रही थी ये चीजें सुनकर। इसी के साथ अब हमें दे इजाजत, और अब जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और भी जो साइंटिफिक चीजें हैं या कुछ ट्रेडिशंस और कल्चर जो इसमें नहीं बताए गए वो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अब हमें दे इजाजत, हमारे वीडियोस करें, हमारे चैनल वीडियोस करें, एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन,